Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. People protest in illegally occupied Gilgit-Baltistan, demand abolition of 1949 Karachi Agreement. PM Modi visits J&K for first time post abrogation of Article 370, launches projects worth 20,000 crore rupees. People along LOC in Kupwara converting their homes into homestays to boost border tourism. And later in a section of Incredible India, we'll take you to Mumbai to witness the 40th edition of Hunar Haat. People in various cities of illegally occupied Gilgit-Baltistan and POK recently came out on roads to protest against the controversial Karachi Agreement. Executed on April 28, 1949 between the government of Pakistan and then government of POK, the Karachi Agreement was very much in Pakistan's favour and deprived the people of occupied territories of significant powers and responsibilities. In Gilgit, demonstration was organised outside the press club where people demanded the abolition of the agreement. We have a report. To highlight their opposition to the Karachi Agreement, locals led by the Awami Action Committee in illegally occupied Gilgit-Baltistan recently held a demonstration outside the Gilgit Press Club. Ever since the 1949 Karachi Agreement was signed, Pakistan has been perpetrating worst form of humanitarian crimes on the people of its occupied territories of Gilgit-Baltistan and POK. Demonstrators said that they strongly condemn this agreement as it was essentially formulated by Islamabad to rectify its administrative control over the region without consulting the actual shareholders. मुआहदा कराची 28 अप्रैल 1949 को गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के नाम निहाद नुमाइंदों के ज़रिए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान का वहाँ पे कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, जबरन गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर की नाम निहाद जो लीडरशिप थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान को 28 अप्रैल के ज़रिए कब्ज़ा किया गया। इस कब्ज़े की हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस मुआहदे को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और आज़ाद कश्मीर की जो आवाम यकसा तौर पर इस मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। हम मुआहदे कराची को यकसर मुस्तरद करते हैं। हमारी नुमाइंदगी लिए बगैर, हमारी राय लिए बगैर, हमें मशावरत में लिए बगैर हमसे मुताल्लिक कोई माहिदा हम किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। The protest also highlighted the alleged excesses of the Pakistan government in Gilgit-Baltistan during the past 70 years. Exposing the true face of Pakistan, demonstrators said, though it talks about giving rights to the people of Gilgit-Baltistan, but in reality, put those behind bars who stand for their rights. एक तरफ कहते हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को वो तमाम हुकूक दिया है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में लिखा है, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के हक परस्तों के खिलाफ चिरोड़ फोड़ लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ ATA के तहत गिलगित बल्तिस्तान में पानी मांगने वाले, सेहत के सहूलियात मांगने वाले, बिजली मांगने वालों पर आप ATA लगाकर 120 साल 90 साल की सजा दी जाती है, जिसका चश्मदीद गवाह आपके सामने बाबा जान मौजूद है। The people of POK and Gilgit-Baltistan have suffered decades of discrimination and persecution owing to skewed policies and agreements framed by Islamabad. There have been massive social and economic depredations in the region at the hands of state-sponsored machinery.
It is high time that Pakistan takes cognizance of the growing resentment amongst the people of the region before it transmutes into something unmanageable. And next we take you to a small village of Chilmishdas in illegally occupied Gilgit-Baltistan, where people are suffering for years due to improper water and electricity supply. Even after repeated pleas, government has failed to take their plight into consideration, leaving them to suffer. Lying on the banks of majestic Hunza River, Chilmishdas, also known as Faizabad, is a small village in the suburbs of Gilgit city. Comprising of around 400 households, the village is mostly inhabited by farmers who are dependent on the waters of Hunza River for agriculture and drinking purposes. But with the reduced flow of river, people in Chilmishdas are now facing existential crisis. While during other seasons they somehow manage to draw water from diversion channels, but they too run dry during summers. गिलगित के नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है पानी का मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। खुसूसन जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो है हम दरिया के किनारे मौजूद है, यहाँ से कूल के ज़रिए से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे वो कूल ख़त्म हो जाता है, पानी की बहाव की वजह से वो कट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तकरीबन कोई 300-400 आबादी पे मुश्तमिल है, 300-400 घरानों पे मुश्तमिल आबादी है यहाँ पे, तो उनके लिए पानी जो है मुकम्मल तौर पे कट जाता है। Though many a times villagers built a water channel, but due to continuous erosion from the river, it soon becomes non-functional. Along with water shortage, the village also faces electricity issues, which worsen the situation during winters. बेसिकली मसला ये है यहाँ पर कि पानी का मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि चैनल ख़राब होने की वजह से तकरीबन 15 सालों से यहाँ यानी ऊपर वाली आबादी जो है वो कोही और ज़मीन से पानी निकाल कर ये लोग अपने खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में सर्दियों में लोड शेडिंग की वजह से यहाँ बहुत दिक्कत होती है पानी की, क्योंकि पानी का दार मदार बिजली के साथ है। जब बिजली होगी तो होती है तभी पानी निकाला जा सकता है ज़ेर ज़मीन से। तो गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि हम ये मुतालबा करेंगे कि गवर्नमेंट इस मसले का बहुत जल्द अज जल्द कोई हल निकाले। Even though the rivers of illegally occupied Gilgit-Baltistan are acting as a lifeline of Pakistan's water needs, the region itself is facing water shortage for years. The successive governments have just passed the ball from one court to another, but have failed to resolve the issue, forcing many residents to migrate to other areas. Next, we move on to Jammu and Kashmir, that recently welcomed the Prime Minister Narendra Modi, who had his first formal visit to the Union Territory since the scrapping of Article 370. During his visit, PM Modi launched development projects worth 20,000 crores and also addressed the Gram Sabhas across the country to mark the National Panchayati Raj Day. We have a report. Democracy and development is reaching grassroots in Jammu and Kashmir. This is what the Prime Minister Narendra Modi said as he addressed a gathering of more than 30,000 members of Union Territory's rural bodies in the Parli Panchayat of Samba district. Organized to mark the National Panchayati Raj Day, the event was also joined virtually by the Gram Sabha members from across the country. During his address, PM Modi highlighted the change that the territory is witnessing post-abrogation of Article 370. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। As a part of the event, PM Modi, accompanied by the Lieutenant Governor Manoj Sinha, also visited the technology exhibition, which too was organized in Palli Panchayat. It was set up to motivate startups and help create awareness about the enormous new avenues of livelihood being availed across the country. In addition to it, PM Modi also inaugurated and laid foundation for various development initiatives worth 20,000 crores. These projects include 850 megawatt Ratle hydroelectric project and 540 megawatt Kwar hydroelectric project, Banihal Kazigund Road Tunnel, 3 road packages of Delhi-Amritsar Katra Expressway, 500 kilowatt solar power plant at Palli, among many others. It is anticipated that these projects will not just speed up development in Jammu and Kashmir, but will also generate enormous employment opportunities. मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। सरहदी गांवों के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। हिंदुस्तान भर की सरहदों के आखिरी गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना इस बार बजट में मंजूर की गई है। उसका लाभ हिंदुस्तान के सभी आखिरी गांवों को जो सीमा पर सटे हुए हैं, वो वाइब्रेंट विलेज के तहत मिलेगा। इसका अधिक फायदा पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी मिलने वाला है। To encourage the rejuvenation of water bodies, PM Modi also launched a new initiative, Amrit Sarovar, aimed at developing and reviving 75 water bodies in each district of the country. Members of Panchayati Raj institutions across Jammu and Kashmir expressed their gratitude to the Prime Minister for laying immense stress towards the progress and prosperity of their union territory. पहली बार हम देख रहे हैं कि जम्मू के साथ साथ में कश्मीर में भी एक उत्साह है कि जब से इलेक्शन होने के बाद 3 टाइप सिस्टम आने के बाद डीडीसी बीडीसी इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट टाइम जो इवेंट पहले कभी यहाँ पे नहीं हुआ, यही इवेंट शायद देश के किसी और राज्य में होता था, कहीं और होता था। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा हमारे लिए ऑनर की बात और कुछ नहीं है कि आज मोदी जी हमारे यहाँ पे ये वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें तो बहुत उम्मीदें हैं। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो बहुत कुछ हमारे लोगों के लिए किया है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो लॉन्च की हैं, तो हम उस पे भी सहमत हैं।
आगे भी हमें पूरी हम आशा करते हैं कुछ ना कुछ हमें वो बता के जाएंगे, तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज। Ever since the centre removed Jammu and Kashmir's special status under Article 370 in 2019, Jammu and Kashmir is writing a new story of development. With more and more investments pouring in, the Union Territory has significantly moved from a sleeping business destination to a land of opportunities. As the ceasefire between India and Pakistan has been holding well for more than a year, J&K administration is keen to promote border tourism. While Indian Army is at the forefront of the initiative to ensure safety and security of the tourist, locals in the border villages are also contributing towards transformation of their areas into a tourism destination. In Kashir, that lies along the line of control in North Kashmir, people have started converting their homes into homestays to boost tourism. Have a look. Located on the banks of river Krishan Ganga, Kashir is the last Indian village along the LOC in Kupwara district of Jammu and Kashmir. About 165 km northwest of Srinagar, this picturesque village is enclosed by tall deodar trees, mountains, barbed wires and army men at every nook and corner. Though Kashir is an unexplored destination yet, but with border tourism gaining traction in the Union Territory, villagers have started converting their homes into homestays. Every facility along with homemade food is available at these homestays cum hotels with a touch of Kashmiri culture. यहाँ पर मतलब टूरिस्ट आए, आकर देखें। यहाँ पर आए थे, मुंबई से लोग आए थे। ये हमारा होम मकान है अपना, ये रहने के लिए। इसी को हमने यानी होटल के तौर पर तैयार कर लिया है। तो वो मुंबई से आए, बहुत खुश थे वो। यहाँ पर मैं उनसे, वो हमारे पास रहे, 2 नाइट में रहे, तो वो बहुत खुश थे। उनको खाने पीने की हर एक चीज़, वाजवान वगैरह हर एक चीज़, फैसिलिटी रूम की उनको मिली। उन्होंने कहा जैसे मुंबई में है ऐसा यहाँ भी है। हम चाहते हैं कि बहुत यहाँ पर आए हम, ये हमारी बहुत यानी खुशी की बात होगी। यहाँ की मतलब डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ तरक्की की बात होगी। अगर ये LOC हमारा ये इलाका ये आगे जाएगा तो ये खुशी की बात है। This initiative by locals to attract tourists and generate employment is being fully supported by the Indian Army that will ensure the safety of tourists. Army has already been making consistent efforts to promote tourism in the border areas. Last year, it renovated a cafe at Kamman Post, which is the last point of the India-Pak border in Uri district. It also hosted various cultural events and invited Bollywood celebrities at areas like Gurez, Uri and Kashir to attract tourists. Recently, it organized a 5-day-long event, Explore Gurez, wherein it invited 8 social media influencers from across the country, including 2 from Kashmir, to promote the Gurez Valley and put it in Kashmir's tourism map. The efforts of Indian Army are highly praised by locals, which they say are giving boost to development as well as employment. ये जो आइडिया है, ये हमारा आइडिया बहुत पुराने से था कि हम चाहते थे कि यहाँ पे टूरिज्म को फ़रोग मिले, लेकिन सपोर्ट नहीं था।
तो आज इंडियन आर्मी हमें यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रही है, वो टूरिस्ट को बाहर से मतलब आने के लिए बोल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जब बाहर से कोई बंदा आएगा तो उसे मेन चीज़ चाहिए होती है, मेन चीज़ ये चाहिए होती है सिक्योरिटी की और उसको परमिशन वगैरह। लेकिन आज हमें पूरा इन्होंने वसूख से कहा कि आपको कोई भी परमिशन की कोई भी ऐसी चीज़ की नीड जो है वो नहीं होगी। तो इसीलिए जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उनको पता चलेगा कि केरन क्या है, कैसा रहन सहन है। वो भी आगे जाके अपने 10 दोस्तों को बोलेंगे कि नहीं वहाँ पे जाइए। जब हम उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीट करेंगे, अच्छे तरीके से हम उनको वेलकम करेंगे, तो बाकी दोस्तों को जब वो आगे जाके अपने फैमिली मेंबर्स को दोस्तों को बोलेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आने बढ़ेंगे और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी माशी हालात जो है वो बढ़ जाएंगे, इनकम होगी। तो उसके बाद जब इनकम होगी, अच्छी इनकम आएगी, तो हम उसको इनकम जनरेट जब हो जाती है तो फिर हम वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। J&K administration is also taking huge strides to promote tourism in border areas. Under one such initiative, it will soon be starting the construction of 600-kilometer long highway along the border that will connect Gulmarg with Kargil and Dras in Ladakh. The move to open up tourism along the LOC in Kashmir came in the wake of ceasefire agreement that was signed between India and Pakistan in February last year. It has brought immense relief for the border dwellers who are now looking forward to welcome tourists. And next we move on to our section of Incredible India, where today we'll take you to country's showbiz capital, Mumbai, that recently hosted the 40th edition of Hunar Haat. An initiative of the Ministry of Minority Affairs, the fiesta aims to uplift the artisans, craftsmen and traditional culinary experts of the country. In Mumbai, Hunar Haat presented a wonderful confluence of craft, culture, music and food to the visitors. Have a look. Organized with the theme Craft, Cuisine and Culture, the 12-day-long Hunar Haat in Mumbai became a one-stop shop for credible and high-quality Swadeshi products. Aimed at providing market exposure and economic impetus to artisans and craftsmen of the country, the event saw participation of about 1,000 artisans from over 30 states and union territories this year. From handmade cloth bags to bronze and bamboo home decoration items, a number of products were displayed at the Haat, leaving visitors spoiled for choice. Besides being a platform to preserve, protect and promote indigenous products, the event is also an opportunity to meet the faces behind the meticulously made products. ओडिशा एक मतलब एक बहुत कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ का जो मेन आइटम है कांसे का, जो हैंडमेड यूटेंसिल्स है कांसे का और पीतल का, इन दोनों को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो युग में ये मशीन से जो तैयार होने वाले जो बर्तन आ गए, जैसे कांसा भी आ गया और पीतल भी आ गया, तो अभी लोग इसको मतलब पूरा भूल चुके हैं, जबकि ये चीजें उससे ज्यादा क्वालिटेटिव है, स्ट्रांग है और हेल्थ के ऊपर इन सब का बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है जो हैंडमेड चीजें होते हैं। As no festival or event in India is complete without food, Hunar Haat also set up a number of stalls offering several delectable items to relish. From Indian street food to famous Hyderabadi biryani to desserts, there was something for everyone. Hunar Haats are being organized in all parts of the country with the resolve of vocal for local and strengthen the idea of Atmanirbhar Bharat. पहली बार मैं यहाँ आया हूँ
तो ऐसा लग रहा है कि पूरी भारत इकट्ठा एक जगह हो गई है। मैंने जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि विविधता में एकता और जो डाइवर्सिटी इन इंडिया, वो रियली वो चीज मुझे आज दिख रही है। और ये तो मैं पूरा श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, हमारे नकवी जी को देना चाहेंगे। मतलब कि चाहे खाने का कोई आइटम हो या कपड़ा हो, पहनाव हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी छोटे जगह का, लोकल पर वोकल जो मोदी जी का जो ये आवाज है ना, वो बुलंद हो रही है, वो दिख रही है। और मुझे लगता है पूरे भारतवासियों को इसको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देसी चीजों को यूज करना चाहिए, विदेशी को त्यागो। Besides promoting craft and food, Hunar Haat also enticed the visitors with its musical and cultural program. The circus shows remained the major attraction at the 40th edition of Haat, as around 35 circus artists performed daily. Renowned artists of the country like Pankaj Udas, Anu Kapoor, Altaf Raja and many more who have performed at different Hunar Haats across the country were also facilitated at the event by the Union Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi. हुनर हाट में जहां एक तरफ हमारे दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, कलाकार ये तो हैं ही, हमारे देश की जो आत्मा है वो संगीत है, कला है। और हुनर हाट में हमारे देश के तमाम बहुत बड़े बड़े, बहुत उभरते हुए, बहुत जाने माने कलाकार अपने अद्भुत, अपने शानदार कला का प्रदर्शन हर दिन करते हैं। Just within a short span of 6 years, Hunar Haats have been successful in providing employment opportunities to more than 9,50,000 artisans and craftsmen across the country, among which 50% are women. They are held as part of series of 75 Hunar Haats that are being organized under Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate India's 75 years of independence. And that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team. अपनी गिरद पेश में आप अपनी इज्जत का लिहाज रखते हैं। मैं पेड़ हूं, शाखों पे मेरे बरगो समर है। कभी जिंदगी में मायूस नहीं रहा, लेकिन हालात की वजह से नाखुश हूँ। मायूस नहीं हूँ, शायद लगा कि लड़के में कुछ है करने को। शौक कहिए, शगल कहिए कि अगर हम न पढ़ते न लिखते तो क्या देखिए, शादी हो गई और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगयो नाज़नीन चाले। शायरी है ही ऐसी चीज, जब तक अंदर से कोई चीज आपको कहलवाना थे, आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं, खुदा के फजल करम से सारे सबों की शादियां हो चुकी हैं। ये बोलता है फकीरी, अरे बाबा इसका सब उल्टा हो गया। ये मैंने बोला है फकीरी, काब वो मेहराब चुमई फकीरी। पिछले जमाना जब देखता हूँ तो बहुत सी यादें वाबस्ता है, कुछ मीठी, कुछ तलख। बात से बात देखिए ये प्रोग्राम हर सोमवार और जुमेरात को रात 9 बजे डीडी कशिर पर।